contain it. The feeling just takes over me. Got me hooked and I'm addicted. You said हेलो गाइस, वेलकम टू माय नीलेश एनएस चैनल और स्वागत है आपका महाकाली गाड़ी बॉडी वेल्डिंग वर्क्स में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन भाई, डायरेक्टर गुजराती के। तो उनकी गाड़ी बनी है बोलेरो पिकअप 2 पॉइंट वाली, देख लीजिए। इसका वीडियो बताएंगे आपको, पूरा डिज़ाइन बताएंगे। तो इसके पहले चेतन भाई से आप बात कीजिए कैसी गाड़ी बनी है। चेतन भाई, इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। नमस्कार બધા મિત્રોને, ગુજરાતના મિત્રોને અને આખા ઇન્ડિયાના મિત્રોને। જય મહાકાળી વેલ્ડિંગ વર્કર્સ જે બધી ગાડીઓના બોડીનું કામ કરે છે। એમાં એક ગાડી અમારી બી છે, બોલેરો 2.0, જેનું કામ ખૂબ જ ધ્યાનથી અને ખૂબ જ ખાતરીપૂર્વક અને ફિનિશિંગથી અને સારું કામ સારા ભાવમાં અને સારી રીતે મસ્ત કામ કરીને અમને આપ્યું છે। અમને આ કામ જોઈ અને અમને બહુ ખુશી થઈ, બરાબર। અને તમને બી રિક્વેસ્ટ છે કે ટાઈમ મળે તો એકવાર જય મહાકાળી બોડી વર્કર્સમાં એકવાર વિઝિટ જરૂરથી કરજો। ચેતનભાઈ, આપણે ક્યાંથી આવવાનું? આપણે આવવાનું છે ડીસા। ડીસાથી અહીંયાથી કેટલું થાય આપણે આવું? ડીસા અહીંયાથી આપણું છે 200 કિલોમીટર જેવું। 200 કિલોમીટરથી ચેતનભાઈ આપણા ત્યાં આવ્યા છે ગાડીની સ્પેશિયલિસ્ટ બોડી બનાવવા માટે જ, કેમ કે એમને આપણી બધી ડિઝાઇન આઈડી બધું પસંદ આવી ગયું છે ચેતનભાઈને। અને બન્યા પછી તો ઓર ચેતનભાઈ ખુશ થઈ ગયા છે, તે ગૌતમભાઈ પણ ખુશ થઈ ગયા છે, તેમના ભાઈ છે। તમારું શું કહેવું છે બધું? અમારું પણ કહેવું એ જ છે કે ભાઈ ગાડી બહુ મસ્ત બનાવી છે અને તમે પણ અહીંયા એકવાર મુલાકાત લો, તમને સારું લાગશે। પૈસા વસૂલ છે। ચેતનભાઈ તો દિલથી ખુશ થઈ ગયા છે। ખરેખર આપણે કંઈ એવું નથી કે કોઈ આપણે પ્રચાર કરવા આવ્યા છે, પણ દિલથી જો સાચી વાત કરું ને, ઈમાનદારીથી, તો મને આ ગાડીનું કામ, આ લોકોનું કામ જોઈ અને આ લોકોની જે લેંગ્વેજ છે, જે ભાષા છે, એ જોઈને અને કામ જોઈને મને બહુ જ મજા આવી છે। ચેતનભાઈ તો ખુશ છે। હવે ચલો તમને બતાવશું ગાડીનો પૂરો રિવ્યુ। આ છે પપ્પા અને ચેતનભાઈ, એમની પણ પરિચય કરશે। કેવું લાગ્યું ચેતનભાઈ કામમાં? ખરેખર બહુ મજા આવી કામ કરવાની। અને તમારી જે ભાષા છે એ ભાષાને મોહીને જ મારે અહીંયા અમદાવાદ સુધી લાંબુ થવાનું છે। બાકી બોડી કામવાળા તો ઓલ ઇન્ડિયામાં ઘણાય છે, પણ આ લોકોનો જે વ્યવહાર છે એ ખરેખર બહુ જ સરળ વ્યવહાર છે આ લોકો। આપણે યુટ્યુબમાં બધા જોવા માંગે એ અહીંયા આવી શકે ને આપણે? અને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આ લોકો જે આપણે યુટ્યુબમાં બધી આપણે ગાડીઓ તમારો આપણે જોવે છે તે અહીંયા આવી શકે બોડી બનાવવા હા, માટે? બિલકુલ, એકવાર જરૂરથી વિઝિટ કરો તમે, કોઈ પણ ગાડી હોય। ओके डन। ले स्टार्ट करते हैं। यहाँ बम्पर से यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पट्टा हो गया है साकर में, और कोई भी डिज़ाइन गाड़ी के ओनर ने नहीं करवाया है। जो चेतन भाई है गाड़ी के ओनर, पूरा वाइट एंड ब्लैक कलर ही करवाया है उन्होंने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डंडे हो गए स्टील के, और यहाँ पे 4 की चैनल लगा के सब साकर हो गई कंप्लीट। ये देख लीजिए रजवाड़ी वाला जो हमने कैरियल बनाया है, इसका इस तरह कुछ लुक आता है। यहाँ पर पगथिया हो गया कंप्लीट, सीढ़ी भी हो गई रेडी ऊपर चढ़ने के लिए। कैरियल का लुक देख लीजिए दूर से। ऊपर की साइड में इस तरह पूरा ब्लैक बीच में रखा है पट्टा, उन्होंने माता जी का नाम लिखवाने के लिए। यहाँ पर डिजाइन विजाइन लगा के पूरा कंप्लीट। यहाँ पर झूला साकर हो चुकी है वाइट, साकर भी वाइट, नीचे के पत्ते जो लगे हुए वो भी वाइट, ऊपर में भी वाइट, पूरा वाइट गाड़ी करवा दिया। बहुत ऑफिशियली मस्त लगती है। आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए आपको भी कैसी लगती है गाड़ी। और पीछे के साइड में इस तरह मैंने कुछ नया डिज़ाइन लुक किया है। यहाँ पे दोनों साइड 2 पतरा बीच में हार्ट लगाया है। यहाँ पे ये देख लीजिए साकर वाकर लगा के पूरा दोनों साइड डिज़ाइन, नंबर प्लेट, यहाँ पे पतरा मजाकरा हो गया है रेडी। सपोर्ट लगा के, एंगल लगा के, हैंडल ऊपर की पाइप हैंडल की पकड़ने के लिए, पाटिया लगाने के लिए एंगल हो चुकी है। ये साकर दोनों साइड लग गई है। डबल एंगल लगा के हुक कंप्लीट हो गए है। अंदर के साइड की बात करते पूरा ब्लू कलर हो गया है कंप्लीट। 10 फुट की पूरी चद्दर हो चुकी है, साइडों में भी 10 फुट, ये डीप वाला भी 10 फुट, पूरी कंप्लीट त्रिकोण डिजाइन। आगे की साइड में एंगल, ऊपर डबल एंगल। दूर से भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 2 साइड 2 हमने एंगल के टुकड़े लगाए जो ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे बड़ी हाइट होने के कारण
और कलर का फिनिशिंग आप देख लीजिए, रेडियम और डबलिंग कलर उन्होंने नहीं करवाया है, गाड़ी वही बनवाई है उन्होंने रजवाड़ी। आ गया है साइल, गैस साइल कैसे गाड़ी बनी है? एक नंबर कंप्लीट, उन्होंने मेहनत की है। यहाँ पर फोल्डेबल कैरियल हो गया है, आगे के साइड में एंगल, साइड व्यू भी देख लीजिए। डीजल का फ्यूल के लिए यहाँ पर हो गया है रेडी, पगथिया हो गया है। देख लीजिए ऊपर से कैरियल का कुछ इस तरह लुक आता है।